Hello everyone and welcome to our channel Vikas Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 29th December 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. आज की हमारी फर्स्ट न्यूज़ है न्यूली अपॉइंटेड CEO ऑफ FSSAI के बारे में. सो इसमें श्री Ganjiram, जो कि IAS है, has been appointed as the CEO of the Food Safety and Standards Authority of India. इसके अलावा और भी कई सारी अपॉइंटमेंट्स यहाँ हुई है. सो सीनियर ब्यूरोक्रेट जिनका नाम है संतोष कुमार यादव, ये भी अपॉइंट हुए हैं एज चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसके अलावा सुभाष पांडा ये भी अपॉइंट हुए हैं एज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वाइस चेयरमैन. और हितेश कुमार मकवाना ये अपॉइंट हुए हैं एज एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. इसके अलावा रजनीश विल बी एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs. और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है आर्टिफिशियल हार्ट टू डील विथ अक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम्स बाय IIT कानपुर. तो ये डेवलप किया है IIT कानपुर ने. An artificial heart that would be of great help to people with acute cardiac problems has been developed by IIT Kanpur and the trial on animals would begin next year. So इसके अलावा जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो भी इस वजह से इजी हो जाएंगे. That can be implanted in serious patients. So trial on animals will start from Feb 23 or March 23. So, after success in the trial on animals, transplantation can be done on humans in the next 2 years, that is within 2025. और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है SBI Access ICC Bank to go live on rupee credit cards. So, according to the CEO of National Payments Corporation of India, that is NPCI, इसमें SBI कार्ड ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक जो कि है लीडिंग क्रेडिट कार्ड issuers are expected to go live on rupee credit card on UPI features by March 2023. So with the aim to boost daily transaction values on this feature, which stand at rupees 50 lakh a day, and to provide additional convenience to users and enhance the scope of digital payments. So in June, RBI ने already allowed किया था linking of credit cards to UPI, which is being used as a pay now facility for customers and also for various entities. और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है गौरी अम्मा फाउंडेशन अवार्ड. सो इसमें अलेदा गिवारा, who is a noted Cuban social worker and human rights advocate, has been selected for the first K.R. Gauri Amma National Award, which is instituted by K.R. Gauri Amma Foundation. So this award has been given by Chief Minister Pinarayi Vijayan, which comprises of $3,000. Also a statute and citation that will be given away at a function to be held on January 5, 2023. So, इसके अलावा ये जो डॉक्टर अलेदा है इज़ एन एक्टिव मेंबर ऑफ द क्यूबन मेडिकल मिशन. सो ये जो क्यूबन मेडिकल मिशन है, इट वर्क्स विद द एम टू इम्प्रूव द हेल्थ प्रोफाइल ऑफ चिल्ड्रन इन लैटिन अमेरिका. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. फरहान बेहरदीन अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. सो ये जो फरहान बेहरदीन थे, ये साउथ अफ्रीकन बैटर है, who has announced a retirement from international cricketing career. So, Farhan Behardin also led in 3 matches against Sri Lanka in January 2017. So, Farhan Behardin's last international game came way back in 2018 to win over Australia at the Canberra Stadium. और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है about winner of Elite Women's Boxing Championship 2022. So इसमें गोल्ड मेडल मिला है at Women's National Boxing Championship 2022. ये जीता है लॉलिना बोर्गोहेन एंड निखात जरीन ने इन भोपाल. So in this championship, Lolina Borgen
beat Arundhati Chaudhary in the finals, while Nikhat Zareen defeated Anamika of Railways in the final of the 50 kg category. So एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको ये इनके नाम के साथ साथ इनकी कैटेगरी भी याद रखनी है कि वो कितनी केजी कैटेगरी में है। तो इसके अलावा हरियाणा की जो मनीषा है वो 57 kg इन्होंने लिफ्ट किया था, और इसके साथ स्वाति बुरा जिन्होंने लिफ्ट किया था 81 kg। ऑल्सो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड साक्षी जिन्होंने वेट लिफ्ट किया था 52 kg, और मध्य प्रदेश के मंजू बम्बोरिया जिन्होंने लिफ्ट किया था 66 kg क्लिंच्ड गोल्ड मेडल्स इन their respective categories. So the railway team topped with a medals tally with 10 medals, that is 5 golds, 3 silvers and 2 bronze. इसके अलावा मध्य प्रदेश ने 1 gold 2 silver and 5 bronze ग्रैब किए हैं। सो इसी के साथ ये सेकेंड रैंक पर है, और थर्ड रैंक पर है हरियाणा। सो इनमें टोटल मेडल टैली है 2 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज। सो ये है थर्ड रैंक पर। और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है अटल सम्मान अवार्ड। सो मेनी पर्सनालिटीज वो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेरियस फील्ड्स वो ऑनर्ड एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली ड्यूरिंग the 9th Atal Samman Samaroh, that is on the birth anniversary of former Prime Minister of the country, that is Atal Bihari Vajpayee. So, इसमें प्रभु चंद्र मिश्रा has been awarded Atal Samman Award for his excellence in the field of science and research, that is stem cell and regenerative medicine, infertility, especially when IVF also fails. So, इसमें काफ़ी सारे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं इन टर्म्स ऑफ डिजीजेस लाइक प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर, थीन endometrium, etc., with a promising hope for those who are struggling for their own child. So now move on to the next news. Newly appointed Chief of Sarvodaya Bank. So as per the recommendation of RBI, Sarvodaya Small Finance Bank, जो कि है Scheduled Commercial Bank, has approved the reappointment of Bhaskar Babu Ramchandran as the MD and CEO of the bank for a tenure of 3 years, which will be effective from 23rd January 2023. So, इसमें जो सूर्योदय Small Finance Bank है has a wide presence across 13 states and various UTs across India through its 565 banking outlets. So, इसमें also सर्वोदय Small Finance Bank का जो प्रेजेंस है ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा स्टेट्स में भी है। और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है विनर ऑफ वार्टन क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स 2022। सो इसमें IIT Madras has received significant recognition, that is the Wharton QS Reimagine Education Awards in terms of silver category for the Best Programs Award in BS Data Science and NPTEL in partnership with IISc Bangalore. So instead the National Program on Technology Enhanced Learning, जो कि जॉइंट इनिशिएटिव है ऑफ IIT मद्रास एंड IISc रन बाय IIT मद्रास, सो इन्होंने ये टोटल पार्टनरशिप में क्लेंच किया है गोल्ड इन द लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैटेगरी। और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है न्यूली लॉन्च्ड MSME प्रेरणा, जो कि लॉन्च की है बाय इंडियन बैंक। सो फॉर MSME एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन बैंक जो कि है विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया owned public sector bank, has launched its flagship business mentoring program, that is MSME Prerna. So ये लॉन्च किया गया है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सो MSME प्रेरणा जो है it aims at empowering MSME entrepreneurs in terms of skill development and capacity building training in their local languages, capacity to handle crisis in business, also assist them in acquiring necessary financial and managerial skills. So अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये MSME प्रेरणा जो भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है इन्हें ओवरऑल कैटेगरी में इम्प्रूव करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड अदर कैटेगरी और इन्हें बूस्ट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट MSME प्रेरणा विच इज़ लॉन्च्ड बाय इंडियन बैंक। तो ये थे आज के हमारे 29 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।